Dear students, welcome to you in 7th lecture of atomic structure. Topics are characteristics of a wave and electromagnetic spectrum. Clear? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वेव नेचर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स. वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तुमने बताया था आपको कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो ड्यूरिंग मोशन देयर आर टू फील्ड्स आर प्रिपेयर. जैसे चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसके चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिपेयर होती है और उसके मूवमेंट के कारण उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर होती है. एंड दीज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, also in the perpendicular direction of fields. Clear? Remember to it, this wave is transverse wave. Next में आप पढ़ चुके हैं. Wave is two type: transverse wave and longitudinal waves. In transverse wave, vibration occurs in perpendicular direction from the direction of propagation of wave. यदि वेव इस डायरेक्शन में रन कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दिस मोशन में ऑसिलेशंस हो गए. ये वेव डायरेक्शन है और ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं इन दिस. ऐसे में जो वेव्स होती हैं इस प्रकार से रन करती है इन दिस वे, लाइक वाटर वेव्स, लाइक वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. क्लियर? These portions are crest and it is called trough. It is called crest and it is trough. Or you can say height of the wave is crest and depth is trough. तो जितने रेडिएशंस हैं आपके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, that's a transverse wave in this way. In the case of longitudinal waves, vibration occurs in the direction of propagation of wave. Example like sound waves, waves in a spring. खैर हम लोगों को किसके बारे में बात करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and it is always transverse wave. Clear? तो ट्रांसवर्स वेव को बेसिक लेकर के हम लोग वेव के पैरामीटर्स पढ़ेंगे, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. Clear? It is parameters of wave. First we go wavelength. Wavelength. अभी मैंने बताया आपको कि क्रस्ट और डेप्थ आपका क्या बनता है? ट्रूफ. तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या कॉन्जिक्यूटिव डेप्थ के बीच की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. और यू कैन से लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ. क्लियर? ये दैट इज डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crest or trough. ये तो दो consecutive crest लेंगे या consecutive trough लेंगे. This is called wavelength and represented by, denoted by lambda. This symbol is called lambda.
Clear? In other words, we can say length of one wave is called, length of one wave is called wavelength. The length of one wave is called wavelength. In this way. This is the direction of wave. Direction of propagation of wave, you can say. And these are called crest. This is also crest, and this is also crest. Distance between two consecutive crests, it is called lambda. Or this is called trough. Clear? The distance between two consecutive trough is called wavelength lambda. This is lambda. Clear? Or you can say length from this point to this. It is called one wave. And it is called half wave. It is called half wave. What is crest? The height of the wave. And trough, depth of the wave. Clear? Now, this lambda is expressed in different units. SI unit is meter. Clear? Units is meter in SI system. They are very short. Units are also used like angstrom, micron, nanometer, picometer, and so on. Where you know 1 angstrom is equal to 10 to power minus 8 centimeter or 10 to power minus 10 meter, or 10 to power minus 6 micron. This is called angstrom, micron. In the same way, nanometer is equal to 10 to power minus 9 meter, and another picometer is equal to 1 micrometer. You know 1 micron is equal to 10 to power minus 6 meter. So they are 10 to power minus 12 meter. Where remember to it, 1 micron is equal to 10 to power minus 6 meter. Clear? These are different units are used for the representation of wavelength lambda. Now we go. Another parameter, frequency. Frequency of wave. How it is defined? It is defined as the number of clear? Number of waves passing through a point
in 1 second. Clear? It is really a reciprocal of time period. It is equal to reciprocal of periodic time or time period. What's time period? Time taken in traveling of one wave. ये जो वन वेव यहां से वेव स्टार्ट हुई और ये वेव यहां पहुंची वन वेव, यहां तक आने में जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी is denoted by this is symbol. Clear? What is the name of this symbol? This symbol is called nu. Clear? So they are really nu is equal to 1 upon t, 1 upon time period. And what will be unit? Time in the second, 1 upon second, that is per second. The unit is hertz, surely written in this way, or second inverse, or cycle per second. Clear? This is unit. Where 1 hertz is equal to 1 cycle per second. ये एक यहां से यहां तक पूरा साइकिल कहलाता है. और यू कैन से, ठीक है ना, 1 second inverse, शॉर्टली ये भी कहा जाता है. There are also other large units of frequency like kilohertz, megahertz. 1 kilohertz. Kilohertz. Clear? Or you can represent in this way, kilohertz. 1 kilohertz is equal to 10 to power 3 hertz. Clear? And megahertz, shortly written in this way. 1 megahertz is equal to 10 to power 3 kilohertz is equal to 10 to power 6 hertz. Clear? These are kilohertz and megahertz. Now we go another topic, the velocity. Velocity of it. For electromagnetic radiation, it is symbolized by small c. But velocity क्या होता है? Traveling distance per second. Clear? So it is defined as linear distance traveled by the wave per second. Clear? एक सेकंड में वेव कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उसको कहेंगे वेलोसिटी. नाउ वी गो, इसको किस यूनिट में शो करेंगे? मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट. नाउ रिलेशन
between frequency, velocity and wavelength. This is relation is equal to nu into lambda. Velocity is equal to nu into frequency into wavelength. Clear? When you take in nu in the per second, lambda in meter, then C come in meter per second. Remember to it, for all electromagnetic radiations, speed of C is equal to the speed of light. That's 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is also the speed of light, and it is same for all electromagnetic radiations. Clear? Now we go another topic, amplitude. Amplitude of the wave. Hence, this is wave. This is the height of crest and depth of tube. Both are same, and it is called amplitude. Amplitude is it is defined as height of crest or depth of trough in a wave. Wave is electromagnetic radiation denoted by small a and expressed into meter, centimeter and so on. Now we go another topic, the wave number. Wave number. What is the wave number? It is defined as the number of waves per unit length यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं वो वेव नंबर, एंड इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ wavelength and denoted by nu bar. So their wave number is equal to 1 upon lambda. That is the formula. But is this numerical sign पर बस यूनिट्स का केवल ध्यान रखेंगे आप. Now we go another topic, electromagnetic
spectrum. What is electromagnetic spectrum? देखिए, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके वेवलेंथ के ऑर्डर में या उनके फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करें तो जो सीरीज मिलेगी, दैट सीरीज इज कॉल्ड electromagnetic spectrum. So we can say when different electromagnetic radiations are arranged in increasing order of their wavelength, that is lambda, or decreasing order of their frequency, that is nu. Then the complete series is called electromagnetic spectrum. In different रेडिएशंस को हम लोग उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो इस सीरीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्लियर? डिफरेंट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है. केवल ऑर्डर क्या होता है उसको हम लोग शॉर्टली लेकर के चलते हैं. फर्स्ट is cosmic rays and then gamma rays. Radiations order है ये. Then we take an X rays. After X rays, they are UV rays. UV means, what is the full name of UV? Ultraviolet rays. Then we go visible spectrum, which is also called VIBGYOR. And then IR. IR means infrared rays. And then microwaves. Clear? Microwaves में दो आती हैं, FM waves and AM waves. FM and AM. Clear? बल्कि इनको अलग कह करके हम लोग रेडियो वेव्स कह देते हैं. And then long radio waves. बल्कि रेडियो वेव्स में ही हम लोग दो भाग बांटे हैं, AM, FM और AM. In this, these are parts. This is increasing order of wavelength. Clear? हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो 10⁻⁻16 क्लियर मीटर से लेकर के और ये
लॉन्ग वेव्स तक देखें तो 10 टू पावर 8 मीटर तक रन करता है। क्लियर? 10 टू पावर 8 मीटर तक रन करता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लैम्डा के लिए बात हो गई आपकी। फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो 10 टू पावर 24 हर्ट्ज से स्टार्टिंग होती है कॉस्मिक रेज की। क्लियर? और एंड है 10 टू पावर 0 हर्ट्ज। डिफरेंट ऑर्डर्स गिवन इन एनसीईआरटी बुक, डिफरेंट लेवल पे इनको गिवन। इसमें से विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। दिस दे आर विब ग्योर, दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम। Clear? This is started from the 380 nanometer. This is wavelength and goes up to 750 nanometer. Yellow is about 550 nanometer. In the same way, indigo about 430 nanometer, blue about at 450, green about at 490. यहां से लेके यहां तक इसमें रेंज पूरी इस प्रकार से आएगी। In the same way, orange at about 590. This is increasing order of wavelength. V stands for violet, I for indigo, blue, green, yellow, orange and red. This is called electromagnetic spectrum. Clear?